यो, हम लाइव आ चुके हैं भाई। इतना फेक करा मैंने ये, क्योंकि मैं दोबारा कर रहा हूँ। तो भाई आज हम जो करने वाले हैं वो बहुत तगड़ी चीज़ है। और वो है हमारी, हमें 3 वीडियोस देखनी है। हमारा मोटिव है, मोटिव क्या कहते हैं इसको, हाँ, हमें 3 वीडियोस देखनी है आज, जिनमें से हमारी ये 3 वीडियोस हैं। ठीक है। और एक एक करके कुछ ना कुछ सबसे सीखने वाले हैं हम। पहली वीडियो हमारी है हाउ टू क्रिएट कंटेंट नो वन एल्स कैन। तो शायद इससे मुझे कुछ सीखने को मिले, और उसके बाद मैं अपने प्रीमियर्स की कोचिंग की कुछ करूँ। हाय 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 हाय, कैसे हो भाई? भाई तो शुरू करते हैं यार, देखना ठीक है। तो ओके, मैं कितना नूब हूँ भाई, अपना डिस्प्ले दिखा भी नहीं रहा हूँ। क्रेजी भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा क्रेजी बंदा हूँ भाई। भाई फर्स्ट हो भाई तुम भाई, वेलकम भाई। भाई देखते हैं भाई, अगर पहली वीडियो हमारी, अगर इसकी आवाज़ आ रही है तो भाई बता देना मुझे, ठीक है? अगर वीडियो की आवाज़ आ रही है तो, अगर नहीं आ रही तो वही बता देना मुझे। Creativity is a talent. You're either born with it or you're not. That's the type of lie people hide behind. Creativity is not a talent. Actually, it's like making a cocktail. All you need are the right ingredients and the right mix. That's it. You don't have to become special because you already are very special. There's only one of you. हाय भाई, हाय हाय हाय। बार बार हाय हाय क्यों लिख रहे हो भाई? मुझे क्या लग रहा है भाई, मेरा माइक भी इस ऑडियो को ले रहा है जो मैं, फिर तो क्रेजी सीन हो जाएगा भाई। इतना सब कुछ करने के बाद भी नहीं होगा, मुझे सुनना पड़ेगा बेटा एक बार। You in this world. एक बार सब No duplicates. Okay, only you have lived your life. So, what are the ingredients of this cocktail? Well, it has three: our past experiences, आई नीड ईयरफोन्स ब्रदर, मुझे लेके आने पड़ेंगे भाई अपने। वेट।
Why did my face cam? New gaming PC build? Yeah. New streaming PC, whatever. What are the specs? I got the Ryzen 9 950X 3D and like 5070 Ti and like 32 gigs of RAM, so I got really good specs, but it was really expensive as well, so. You're streaming with OBS Studio? Yes, I do. Wait. What happened? Why did my face cam? Wait, what happened to my face cam? Hello? Wait, guys. What? मेरी आवाज रिपीट हो रही है भाई। अगर मैं आवाज क्या, मुझे मतलब साउंड रिपीट हो रही है। शिट भाई, बहुत सी दिक्कत हो रही है। एक काम करते हैं, मैं देखता हूँ उसे और उस समय माइक ऑफ करके रखूंगा। पूरा देखने के बाद या तो मुझे बोलना पड़े तो बीच में बोल दूंगा, ठीक है? तो मैं माइक ऑफ कर लूँगा। हाय हाय, कहाँ से off? Current flow state, and the influence from the world. Well, it all comes down to using our own ingredients. That's the key. But why does that happen so rarely? Why do we get served so many shitty cocktails each day? Because most people think that it's better to use the exact same ingredients with the exact same mixture from somebody else's cocktail. But it just won't taste the same. Now, it's just a drink on the menu. If you don't know what to make, if you feel stuck every single time, if all of your projects look the same, it's time to remove the constraints. Move a few steps back. Open your mind. For making an incredible video, a piece of art you thought you couldn't create, you just need creativity and execution. The knight represents our creative force, the piece that can move first, unexpectedly, and against convention. It sees possibilities others can't, creating a path that may seem indirect, but can always lead toward victory. In the same way, creativity shapes the vision of our final cut long before it's complete. So, let's play a little game with our knight. Let's gather our 3 ingredients. Definitely not out of nowhere. There's one game on my phone that I've been playing for the last couple of weeks. You see, it's not about searching for a very specific concept. It's more about playing around with what is already in front of you. And in front of me was a digital chessboard. That thought alone gave me enough fuel to work. But to be honest, what pushed me even further was a memory I've been holding on for years. My grandpa. He taught me many things, and one of them was chess. Sometimes he would let me win, but sometimes he would try and challenge me. And whenever he got me in an uncomfortable position, I pulled my special move. I grabbed my knight, and I stumbled all of his figures. So he wouldn't remember their positions, and we would have to restart. A few months ago, I found this mysterious cocktail bar while I was searching for a place to grab a drink. So I went in, I sat down, and I was looking for a drink menu. But the thing is,
there wasn't one. Greetings, sir. First time here, I assume? Hello. Yeah, I think I'm missing something. Don't worry, sir. Actually, we don't have a menu. Instead, we make a custom drink for every guest. Interesting. Just let me know what you like, what you don't like, and feel free to leave the rest to me. Okay, well, I usually take a Negroni. A couple of Negronis, really. Maybe something similar, but with a twist? Sounds excellent. Do you like spicy? Yeah, for sure. All right, we'll get right on it. And then he made me a custom cocktail. So everybody sitting in the bar had their own fusion of essence. I don't know why I told him to be spicy though. Creating is a natural activity, and you have to be able to enjoy natural activities, which you can only do if you're not jerking your brain off. Look, I'm gonna be straight with you. If you're having problems in this field, it's time to cut everything off. Alcohol, drugs, porn, out of the window. I'm not gonna even read that one. I'm very serious about this. I've always been a huge film fanatic, and I've consumed many titles during my very long lifespan of 23 years, but it's not really about the quantity. From a young age, I've had a very important condition before watching a movie. You've probably heard of IMDb, one of the most popular websites for movie ratings, and since I was like 14, I've always gone in and checked what rating my pick had. For context, the maximum rating is 10. Now, if my pick was below 7.5, I am watching. You can strap me to a chair, I'm keeping my eyes shut. Jokes aside, IMDb can usually give you a pretty good insight of what you can expect. And that's all that matters, having a filter. The idea is not to consume as much as possible. The idea is to consume only what matters. I've essentially programmed myself to make great content. Now, when the night has done its work, it's time for the queen to step in. Once you open your mind, it's time to do the heavy lifting. Queen is our most valuable tool. It allows us to move wherever we want and in any direction we like. For editors, the tools are our programs. And what happens when a valuable asset is used by an experienced individual? Checkmate. So, how can you become a master of execution, including content creation, video editing, and 2D and 3D animation? For me, it has been a very rocky road, a path full of trial and error, and I was just figuring stuff out by doing it wrong, then doing it wrong again, and then doing it better. But from today, you won't have to walk alone. You won't need more templates, YouTube breakdowns, or somebody telling you how to follow a certain trend. Today, you finally get the blueprint I never had. UTR Plus. We're not here to teach you only how to edit. We're here to teach you how to think. How to build from scratch in any style for any client at any level without relying on somebody else's system, templates, or shortcuts. Now, you might ask, why would I want to teach others to edit like me? Wouldn't that just create more competition for myself? Well,
The truth is that my creative agency has been exponentially growing for 2 years straight. The current clientele that we have is more powerful than ever before with a demand that I'm honestly unable to fulfill. I don't need more clients. I need guns for hire. Hungry individuals willing to learn and grow. So, if that's who you want to become, this is your invite. Below this video, you'll find a link to learn more about the program. There's a decision to be made. A decision on how you want to live, and if you're ready to build a skill that you'll carry for the rest of your life. हेलो भाई, हेलो हेलो हेलो। यार मुझे चाहिए मेरी चैट साइड में। मेरे चैट साइड में कैसे मिलेगी? हाँ, इससे नहीं मिलती क्या? इससे आनी तो चाहिए भाई। You don't need to be creative.
creative to come up with creative ideas. You just need this one trick. Most people think creativity is about having some magical talent, but the truth is, great ideas come from one simple process, combining old ideas in new ways. Let me prove it. Steve Jobs didn't invent the touchscreen, the phone, or the internet. He just combined them into the iPhone. Shakespeare? He borrowed plots from old stories and made them better. Even Einstein built on existing physics theories to come up with relativity. So how do you do this? Here's the trick. Idea stacking. And here's how it works. Step 1. Absorb relentlessly. Read, watch, listen. Fill your brain with diverse knowledge. The more raw material you have, the easier it is to connect dots. But before you start absorbing with diverse ideas, you need to start creating, even if it's something basic, because there is literally no point if you don't create and just absorb mindlessly. Step 2. Write down interesting ideas. It doesn't matter if they seem unrelated. A marketing concept, a science fact, a personal insight, log everything. Step 3. Find unexpected connections. Ask, how can I mix these? What happens if I apply this idea to that problem? And that's where innovation happens. For example, James Dyson took the concept of a vacuum cleaner and combined it with the mechanics of industrial cyclones to create the first bagless vacuum. See the pattern? Creativity isn't about originality, it's about recombination. But what is the best part? You don't need to wait for inspiration. Just keep stacking ideas and look for overlaps. You can literally try right now. Let's say, for example, you want to record a podcast. Okay, where do most podcasts get recorded? In a room, right? And let's say where people mostly make their vlogs or touch grass, outside, right? I've never seen someone doing a podcast outside, in a forest, or in ruins. Well, there might be someone that I don't know of, but my point is, you don't require talent. You just need a system that works. That's all there is to it. No special talent, just a method that delivers results. ओके, इससे भी कुछ तो समझने को मिला है शायद मुझे। बाकी बाकी कुछ करते हैं यार, बनाते हैं। स्लगिंग विद नाइस स्लगिंग। टाइम का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। सभी ट्रेंडिंग इफेक्ट्स, ट्रांजिशन, टाइपोग्राफी सब सीख लिया। नाउ इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग बैंगर जो आपने कभी नहीं देखा होगा। लुक एट मी केयरफुली। ऐसा सोच तो लेते हैं लेकिन होता कभी नहीं है। तो चलो इसे जड़ से खत्म करते हैं। ऐसा होने के पीछे ये 4 प्रॉब्लम्स हैं। इसका रीजन, सोल्यूशन, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर इतना सफिशिएंट नहीं है तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल आल्सो लेट यू नो हाउ टू बिल्ड पीसीआई, योर पर्सनल क्रिएटिव आइडेंटिटी। और आखिर यही तो चाहिए हर एक एडिटर को, अपना खुद का एक ओरिजिनल सिग्नेचर स्टाइल। तो बी रेडी, क्योंकि आज आपके बहुत से भ्रम टूटने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम इज अनेबल टू थिंक। आप सोच ही नहीं पाते हो एग्जैक्टली करना क्या है एडिट। एंड रीजन बिहाइंड इट इज नॉट लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। आपको कुछ ज़्यादा ही हद से ज़्यादा नॉलेज हो गई है, इस वजह से ऐसा होता है। एंड या थैंक्स टू इंटरनेट। एंड इसका एक सीधा सा सोल्यूशन है, सेट आर्टिफिशियल लिमिट्स। जैसे कि आप पूरा का पूरा जो एडिट है उसमें एक सिमिलर कलर थीम यूज़ करोगे, या फिर जो टाइपोग्राफी है उस पर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, या फिर अगर आप सिनेमैटिक बनाना चाह रहे हो तो मूड सिमिलर रहे, या फिर साउंड डिज़ाइन पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा। एंड ऐसा करने से आपका माइंड जो है वो पैनिक स्टेज से निकलेगा, उसके पास में एक डायरेक्शन होगा कि एग्जैक्टली ऐसे ऐसे करना है, और धीरे धीरे आप क्रिएटिव फ्लो अचीव कर पाओगे। लेकिन इसके बाद में आपके पास में दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी, विच इज़ एसेट्स इशू। देखो एसेट्स का इशू ना सभी एडिटर्स को रहता है, और इसके पीछे रीज़न ये नहीं है कि एसेट्स अवेलेबल नहीं है। एसेट्स बहुत सारे अवेलेबल है इंटरनेट पे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको यूनिक एसेट्स चाहिए, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ही फ्रेश एंड न्यू वाइब दे। और इसी वजह से जितने भी फ्री एसेट्स हैं वो हमें अनुकूल लगते हैं, और जितनी भी चीज़ें ओवर अवेलेबल हैं वो हमें क्रिंज लगने लगती हैं। सच बताऊं तो प्रॉब्लम एसेट्स की है ही नहीं, यूनिक एसेट्स नहीं होते, प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है। तो अगर आप अपने प्रेजेंटेशन पे फोकस करोगे, जैसे अगर हम किसी भी वीडियो को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, विजुअल एंड ऑडियो, तो अगर हम विजुअल पे फोकस करें, यूनिक एसेट्स की जगह अपने प्रेजेंटेशन स्टाइल को यूनिक करने की कोशिश करोगे, तो आपका जो वीडियो है वो काफ़ी फ्रेश एंड न्यू वाइब देगा उन पुराने एसेट्स को यूज़ करने के बाद भी। तो इसीलिए प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको अभी भी ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है देन इट्स ओके। हम इस चीज़ को प्रॉब्लम नंबर 4 में थोड़ा क्लियरली समझ लेंगे, क्योंकि उसमें मैं आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है चीज़ों को उसको भी बताऊंगी। एंड रही बात ऑडियो की, तो ऑडियो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट आपके विजुअल्स होते हैं। तो इसे इम्पोर्टेंट कौन है भाई? हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ऐसे में परफेक्ट म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट्स ढूंढना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है जो आपके विजुअल एंड वाइब दोनों से मैच करें। और ये सिचुएशन और भी ज़्यादा टफ हो जाती है जब मसला रॉयल्टी फ्री पे आके अटक जाए। और इसका सोल्यूशन है
एपिडेमिक साउंड। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय एपिडेमिक साउंड एंड नॉट बिकॉज ऑफ स्पॉन्सर। मैं पहले से एपिडेमिक साउंड यूज करती आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको 50,000 की निकाल, जिसमें आपको अगर आपका जो म्यूजिक ट्रैक है वो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए चाहिए तो आप उसे शॉर्ट ड्यूरेशन चाहिए, लूजिंग दी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे आपको थर्ड प्रॉब्लम आ जाएगी, स्टक वाइल क्रिएटिंग। आप चीज़ों को क्रिएट करते हुए भी स्टक कर सकते हो चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि ऐसा इसीलिए होता है कि आपको एडिटिंग नहीं आती, और हो भी सकता है ऐसा, लेकिन ऐसा होता है बिकॉज ऑफ परफेक्शनिस्ट माइंडसेट। आपका जो परफेक्शनिस्ट माइंडसेट है वो एक ऐसा ट्रैप है जो आपको कई मिनट से लेके कई घंटों और कई बार कई दिनों तक ट्रैप कर सकता है। और अगर आपका माइंड थोड़ा और मेहरबान हो जाए आप पे तो आप क्रिएटिव ब्लॉक के रास्ते से सेल्फ डाउट तक पहुंच सकते हो। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन नहीं है? बिल्कुल है इसका सोल्यूशन, और बहुत सिंपल है। ट्राई अगली फेस रूल। मने कुछ अच्छा नहीं बना पा रहे हो तो बुरा बना दो। अरे यार, पूरी बात सुन लिया करो पहले। हमारा जो माइंड है वो चीज़ों को क्रिएट करने से कई गुना ज़्यादा बेहतर है चीज़ों को फिक्स करने में। कई बार क्या होता है, हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने में लगे रहते हैं। अगर हम मूव ऑन कर जाएंगे तो थोड़े टाइम बाद अगर हम वापस आके देखेंगे तो हमें कई बार पता चलता है कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी भी नहीं जिसमें हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। तो ऐसे में अगर आप वापस आके देखते हो और आपको लगता है चीज़ें फिक्स करनी है तो आप बाद में कर सकते हो और शायद उसमें आपको टाइम भी कम लगेगा। लेकिन कई बार हम स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ों में स्टक कर जाते हैं और फिर हम उन्हें फिक्स करने में लगे रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। अभी तक हमने जितनी चीज़ों की बात की है वो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं। अब हम बात करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम की, विच इज प्रॉब्लम नंबर 4, इंस्पिरेशन। नहीं, इंस्पिरेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हाउ टू एडिट लाइक ध्रुव राठी, वॉक्स, गॉक्स, नीतीश राजपूत। नहीं नहीं, ये भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चोरी करना पाप नहीं है, पकड़े जाना पाप है। एवरी आर्टिस्ट इज अ थीफ एंड ऑल्सो इवन एआई। तो फिर किया जाए? स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये टर्म आपने पहले भी सुना होगा, पर इसकी भी एक कंडीशन है अपने दिमाग को ऐसे चलाने के लिए इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। तो बात करते हैं कि इंस्पिरेशन लेनी कहाँ से है। अगर मैं अपने सोर्सेज की बात करूँ तो वेबसाइट, ट्रिबल, आर्ट स्टेशन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गेम्स भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें एक जगह चाहिए तो आप प्रिंटरेस्ट पे जा सकते हो। जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता तो प्रिंटरेस्ट मेरा मेन सोर्स है इंस्पिरेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं करना है कि आप जाके कॉपी पेस्ट कर दो चीज़ों को। आपको उस मेथोडोलॉजी को स्टील करना है जो उस पर्टिकुलर चीज़ में यूज़ हुई है और उसे आपको अपने हिसाब से ट्वीक करना होगा। ठीक है, बिगिनर्स के लिए थोड़ा टफ हो गया, तो मैं आपको एक